थैंक यू एंड नमस्कार। पहले तो तहे दिल से शुक्रिया कि आप सब इतनी भारी मात्रा में आए हैं आज हमारी फिल्म के लिए, तो उसके लिए आपके लिए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑल्सो तहे दिल से मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा कि आपने हमारी प्रेम कहानी को इतना सारा प्रेम दिया है, स्नेह दिया है, एंड वी आर वेरी ओवरवेल्म्ड विद ऑल द लव दैट इज कमिंग आवर वे। ऐसा हुआ है कि आज की शुरुआत हम एक्चुअली एक ऑस्पिशियस वे से करना चाहते हैं। आप जैसे जानते हैं, जिन्होंने भी पिक्चर देखी है, वो फिल्म का जो अंत है वो उनकी शादी होती है फिल्म में, और हमने बहुत प्रेम, इनफैक्ट इसमें भी एक कहानी है। आलिया और रणबीर की शादी हुई थी और फिर 4 दिन बाद हमारी सीक्वेंस हम शूट कर रहे थे आलिया और रणवीर की। तो आलिया उस हफ्ते 2 बार शादी कर चुकी थी, एक लिटरली रियल लाइफ और एक रियल लाइफ। और शादी की मेहंदी जो आलिया की है वो एक्चुअली इस फिल्म में जो थी वो सेम थी, अपनी शादी की मेहंदी। उसको बस डार्कन किया था हमने, और हम जाके जैसलमेर में हमने वो फिल्म वो गाना हमने दर्शाया, पिक्चराइज किया। वैभवी मर्चेंट ने इतनी खूबसूरती से उस गाने को पिक्चराइज किया। लेकिन जब लेंथ का प्रॉब्लम आने लगा, सबने कहा कि अरे 250 मिनट्स के नीचे होना चाहिए, डोंट क्रॉस 250 मिनट्स, 248 247 पे डाल दो। देन वी न्यू कि फिर हमको उस गाने को एक डब्बे में डाल देना था और रोलिंग क्रेडिट्स को फिर उसके साथ। इट ब्रोक माई हार्ट एज अ फिल्म मेकर, ट्रूली एज अ फिल्म मेकर इट हैड ब्रोकन माई हार्ट कि मैं उस गाने को अपनी पूरी ग्लोरी में सबको नहीं दिखा पाया। हम आज यही इस गाने कुड़मई को हम लॉन्च कर रहे हैं, और यू विल बी द फर्स्ट टू सी इट एंड देन इट विल ड्रॉप ऑनलाइन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई गिव यू प्रीतम दास favorite composition written so beautifully by Amitabh Bhattacharya, picturized as Rocky and Rani Ki Shadi, and I hope you enjoy that. Before we go on, we would like to share this unit with you. Thank you. Thank you so much, sir. All eyes on the big screen. Before we invite the rest of our guests here, what is Kudumai और ये कितना कैसे shoot हुआ? Just tell us something about this. ये हम जैसे मैंने कहा था, ये हमने जैसलमेर में शूट किया। कुड़माई के दिन आ गए, ऐसे लेके शादी का माहौल, एंगेजमेंट इसे कहते हैं पंजाबी में। तो कुड़माई मींस दैट, एंड वी आर होपिंग दैट ये जब अभी और लोगों की शादी होगी तो यही गाना बजेगा। एंड वी शॉट इट विद अ लॉट ऑफ लव। देयर वाज अ सैंड स्टॉर्म, तो थोड़ा वक्त लग गया, बट वी ट्राई टू मेक इट एज ब्यूटीफुल एज पॉसिबल, एंड आई वांटेड टू शो इट टू एवरीवन इन ऑल इट्स ग्लोरी। अभी तो पिक्चर में, एज आई सेड, एकदम साइड पे चला गया गाना। For me, it's heartbreaking as a filmmaker, so I was very, very excited to share this with everybody. I have to say, before I call the members of the cast, that I'd like to thank the entire crew that made this film possible. Yes. From Manoranjan, our director of photography, Sohail, who does sound, all our choreographers, Vaibhavi, Farah, Ganesh, Remo, literally Eka, Manish are both our designers on the film. The entire crew, Sumit, who led the film as producer, and my AD team led by Shona, they were all absolutely game changers for us on the film. Amrita, the production designer, who's been such a spine for me right through my last 12 years. ऐसे बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स हैं जो मैं वाकई तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा, एंड अ बिग शाउट आउट टू प्रीतम एंड अमिताभ, जिन्होंने एंड तक, बैकग्राउंड म्यूजिक के एंड तक, लिटरली वी वर डिलीवरिंग इट राइट टिल द एंड, वो छोटे छोटे चेंजेस कर रहे थे टू द फिल्म जस्ट टू मेक श्योर दैट द व्यूइंग एक्सपीरियंस वाज मोर प्लेजरेबल. So I hope I've mentioned everyone's names. I'm going blank in my head now because I'm kind of overwhelmed, but thank you to this cast and crew that have made this film so special for me in my 25th year. And again, a huge sense of gratitude to the members of the media, to columnists and critics and all members of the media. I have never received this kind of abundant love in my career. I've never known to be a critic's darling. But the day Anurag Kashyap called me and said he saw the film twice, I realized कि कुछ तो बनाया होगा कि that I got a call from him and so many filmmakers and members of the industry. I mean, like, this whole week has been like a fuzzy feeling of love in my heart. जब भी सोचता हूँ तो कभी-कभी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, that I can't believe I'm receiving this kind of love. The beginning of this film was 2 telephonic conversations I had. जैसे कि आप जानते थे, हम तख्त बना रहे थे और फिर पैंडेमिक आ गया और तख्त को हमने
momentarily we kept it aside because इतनी बड़ी फिल्म थी और पैंडेमिक के दौर में उस फिल्म को बनाना was not technically possible. तो मैं एक्चुअली रोज 2 ही महीने मैं अपने कमरे में बैठता था, लॉकडाउन का वक्त था और मैंने ये कहानी का जस्ट ढांचा लिखा. Then of course it was brought together by the brilliance of Shashank Khaitan, Ishita Moitra and Sumit Roy, and a big shout out to Somen Mishra who governed all of them like a true rock star. They wrote the film, but the adjourn came and I had 2 telephonic chats. I called Rocky and Rani, Ranveer Singh, Alia Bhatt, and I said, look, I don't have much of the story. I just have a tiny germ. Are you guys on for it? Literally, that's all it took. They were like, we're on. We're doing this film. Let's do it. Write it fast. And it was that simple. It was that easy. Alia to hai hi ghar ki beti, dharma ki beti. लेकिन रणवीर के साथ मेरा प्रोफेशनल रिश्ता पहली बार जुड़ रहा था. And I will always be grateful to them for actually coming on board to this film on pure conviction and pure regard for just what they thought we were going to achieve with the film. I'd like to call her first. मैं हमेशा कहता हूं कि उसका जो इमोशनल लॉन्च इस आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट का इमोशनल लॉन्च स्टूडेंट ऑफ द ईयर है, लेकिन उनका प्रोफेशनल लॉन्च हाईवे था और उसके बाद जो वो हाईवे पे निकली फिर कहीं और वो गई भी नहीं, वो सीधे सीधे चलती रही with performance after performance winning over audiences' hearts worldwide. When I directed her, मैं भूल गया था कि ये वही आलिया भट्ट थी जिसने शनाया का किरदार निभाया था स्टूडेंट ऑफ द ईयर में. मैं उसे ऑ के साथ देखता था मॉनिटर पे, ये क्या कमाल की एक्टर है, कैसे किसने सिखाया ऐसे. मैंने तो नहीं सिखाया, मैं कोई क्रेडिट नहीं ले सकता. ये इतनी एक्ट्रेस, ऐसी बेहतरीन एक्ट्रेस कैसे बन गई. And she was just amazing for me as a filmmaker to collaborate with. Please put your hands together for the only Rani of my life and now the Rani of the industry and will remain Alia Bhatt. Before we ask you something, let's call the boombox boy. अभी आप सब रणवीर से मिले हैं. वो पता नहीं क्या खा के पैदा हुआ था, पता नहीं अभी भी क्या खाता है, लेकिन शायद ही मैं और ये आलिया ये भी सहमत होगी, pun intended, कि there is nobody who brings that kind of energy on a film set that Ranveer Singh comes with. और मैं इसके पहले मैंने रणबीर के साथ काम किया था, जो एक्चुअली बहुत ही काम, कंपोज्ड और अपनी खुद की एनर्जी लेके सेट पे आ जाता था ड्यूरिंग ए दिल. इसमें मुझे एक दिन का कल्चर शॉक लग गया. देन आई रियलाइज्ड कि ये सारी जो मेहनत वो करता है, वो सारा जो वो जोश और जुनून ले आता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को इनहैंस करने के लिए ले आता है. इस किस्म की एनर्जी ना मैंने देखी है ना मैं देखूंगा. बट आई न्यू वन थिंग, he was the most indispensable character in Rocky और रानी की प्रेम कहानी. There would be no Rocky Randhawa if there wasn't Ranveer Singh. Ladies and gentlemen, put your hands together for Ranveer Singh. Ranveer Singh, ladies and gentlemen, जैसा I said, हमारा boom box boy है. जहां आता है बड़ा सा boom box लेके आता है, उससे भी बड़ा दिल. Ranveer Singh, Alia Bhatt, Rocky और रानी और इनकी प्रेम कहानी. Now I will give it over to them. They have to invite members of their family. So I'll go first. रानी का किरदार और मेरा पार्ट would not have been possible without the authenticity of my family. और जिस दिन करण ने मुझे बताया था कि मेरे माँ और मेरे बाबा और मेरी ठाकुमा का के किरदार कौन निभाने वाले हैं, I knew that day onwards that चलो मेरा काम तो बहुत आसान हो गया. So I would, without further ado, like to bring on stage two very, very, very special artists and the heart and soul of the Chatterjee family. Churni ma'am, Amar Ma, and Tota sir, Amar Baba. पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार. देखो, मैं हमेशा बोलता हूं मुझे स्टेज और माइक मत ही दिया करो. कुछ भी अब कुछ भी हो सकता है. बस मैं इतना कहना चाहूंगा आप सबको यहां देखे आज आई एम सो हैप्पी, मानो जैसे हैप्पीनेस के फुहारे छूट रहे हैं बाय गॉड. और all the more happiness because now I have the great honor and privilege to introduce most wonderful members of our ensemble.
people who are very, very dear to my heart. You've seen the film, and without much further ado, I would like to call on stage Poonam, my mummy, played by Shiti Jo. अरे मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई. I am so happy. You are very happy, and I'd like to now take this opportunity to call our collaborators and the spine of our company. I'd like to take this special. Thank you, Apurva. Thank you, Ajit. Thank you. I felt, like one of my biggest items on my dream and bucket list were realized when I cast this legendary actor. I remember going to his house and meeting him, and as well trained by my parents, my immediate instinct is to go and touch his feet, which I do till today. And he looked at me, he asked me the story, and at the end of that meeting, I was very nervous because I knew he was such a critical part of what I wanted for the film. And I said, oh God, I hope and pray he says yes. And lo and behold, he looked at me, he said, मैं पिक्चर करना चाहता हूँ, ये कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया है. And I looked at him and I said, Dharamji, I'm blessed for life that you will be in our film. And with love in all our collective hearts, with utmost respect, regard, reverence for this man who is unstoppable even today and has the charisma to unmatchable charisma. Literally, please welcome with love in your hearts for none other than Dharmendra, Dharamji. Gentlemen, a big round of applause for the ever so handsome, the real heartthrob, Dharamji. धर्मजी आप यहाँ रहे. धर्मजी एकदम बीच में. नहीं, धर्मजी. I think shouldn't to die.